Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 10, Human Occupation. First of all, we will see the learning objectives of this chapter. First, we will see the meaning of occupation. After that, we will see the four different types of occupation: primary occupation, secondary occupation, tertiary occupation, and quaternary occupation. Meaning of occupation. Now see, human occupation is defined as the doing of work, paid and unpaid, play or activities of daily living within a temporal, physical and socio-cultural context that categorize much of human life. It means क्या होता है? What is the work you are doing? Anything you are doing or doing any activity, whether it is paid or unpaid, is termed as human occupation. जो कि आप लोग काम करते हो, whether आपको उसमें पे मिले या नहीं मिले, बट अपनी नेसेसिटी से आप वो काम करते हो, it is known as occupation. Okay, students, here some pictures are given. Picture A, picture B, picture C, picture D, picture E, and picture F. Picture E and F is given in next slide. This picture will help you in identifying the four different types of human occupation: primary, secondary, tertiary, and quaternary. Now we will look out at the picture A. What in the picture A? What a picture indicates? The cow is eating the grass. Okay. From where we get the grass? It's naturally grown in the field. ना वो naturally उगा होता है field में. Okay, it depends on nature. In picture B was when cow eats the grass, then only she will give the milk. Okay, then only she will give the milk. In that in picture B, woman is taking out the milk from cow. Now in picture C, what is happening? In villages, milkman collecting the milk from the villages. Okay, milkman हर जगह हर village में हर जगह पे जाके milk का collection करता है. Okay, after collecting the milk, they are transporting the milk. Okay, वो ट्रक से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करते हैं milk. Okay, now we will see in the next slide, picture E and picture F. Now, look at in picture E and F. After transporting the milk from the truck, they transport the milk in the milk factory. What happened in the milk factory? In the milk factory, they are making the milk product like cheese, butter, ghee, paneer, shrikhand, and the variety of things they are making in the milk factory. Okay, in the milk factory, there are the person who are testing the milk quality, means product quality. Because after testing the quality of the product, then only they can sell in the market, because the taste, the quality is very important for the sale of the product. So that's why some experts are there who are first testing the quality of the product in the factory only. So what happens? Milk is a raw material, but after that, when they transport the milk in the factory, they are making the butter, ghee, paneer, cheese from the raw material product milk. After that, when they make the product successfully, after that what happened? The exports are testing the quality of the product. After that only they uh, transport the milk product to the retailers, to the wholesaler. They are selling the product to the consumer. Okay, now see in picture F. What is happening there? After production of the product, they transport the milk products to the shopkeepers. Okay, now finally shopkeepers selling the products to the consumer. Okay. Okay, now we will see the four different types of human occupation: primary occupation, secondary occupation, tertiary occupation, and quaternary occupation. First of all, we will see the meaning of primary occupation. We carry out many activities to fulfill our needs. We have many occupation, industries, trades, etc. जैसे कि हम हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. बहुत सारे ऑक्यूपेशन रिलेटेड होते हैं इंडस्ट्री से, ट्रेड से और बहुत सारी चीज़ों से. ओके, सम ऑफ दिस एक्टिविटी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर. उसमें से कुछ एक्टिविटी ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं. इट मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन दिस एक्टिविटीज आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर. ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट उसमें से ऑब्टेन करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है. काउज एंड बफेलोज आर एनिमल. काउ और बफेलो एनिमल्स होते हैं. वी डोमेस्टिकेट हैं, हम उन्हें पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं. सी पिक्चर ए एज यू शो इन स्लाइड 5. वहाँ पे आपने पिक्चर ए देखा होगा. तो 4 इन स्लाइड 4 आपने पिक्चर देखा होगा. वहाँ पे काउ ग्रास खा रहा होता है. आफ्टर दैट इन पिक्चर बी वन वुमेन इज पुटिंग आउट द मिल्क फ्रॉम द
काऊ में से वो मिल्क निकाल रही थी। ओके, नाउ सी, वो काऊ ग्रास ईट कर रहा था। फ्रॉम वेयर वी गेट द ग्रास, फ्रॉम द नेचर। ओके, आफ्टर ईटिंग द ग्रास वे, वो हमें क्या देता है, मिल्क देता है। काऊ हमें क्या देती है, मिल्क देती है। ओके, शी इज गिविंग अस मिल्क। गाँव हमें मिल्क देती है, वो कैसे हमें मिलता है, नेचर से। ओके, वो ग्रास खाती है, फिर हमें क्या देती है, मिल्क देती है। तो वो जो मिल्क होता है वो हमें किससे मिलता है, नेचर से। वो प्रोडक्ट किससे मिलता है हमें, नेचर से। ओके, वी गेट मिल्क फ्रॉम देम, therefore this occupation is directly dependent on nature। therefore ये occupation कहाँ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करता है। such occupation which are dependent on nature are called primary occupation। जो भी occupation डायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एक्सेट्रा। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि काऊ का पहले उसको लोग डोमेस्टिकेट करते हैं, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग द मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। ओके, मिल्क जो प्रोडक्ट है वो किससे मिलता है, हमें नेचर से मिलता है। आफ्टर दैट सम someone keeping the they are domesticating the ships। जो ships को domesticate करता है, from that they are getting the wool। okay, and many one of them keeping domesticate the bee करते हैं, bee keeping। after that we getting the honey from the bee। so these are the parts of the animal husbandry। now many are keeping the fishes in the pond। okay, fish को पालते हैं, then they domesticate the fish and then they are selling in the market। so these are the part which occupation directly depend करता है नेचर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। so once again the meaning of primary occupation is occupation which are dependent on nature are called primary occupation। second one is secondary secondary occupation। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री किस पे बेस्ड करता है, रॉ मटेरियल पे। जब रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट होता है तब जाके इंडस्ट्रीज के वर्क स्टार्ट होते हैं। ओके, मोर ड्यूरेबल गुड्स आर प्रोड्यूस इन एन इंडस्ट्री। मोस्टली ड्यूरेबल मीन्स बहुत दिनों तक चलने वाला गुड्स। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होते हैं। द रॉ मटेरियल सप्लाई टू द इंडस्ट्री इज ऑफन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। जो रॉ मटेरियल होते हैं जो हम इंडस्ट्रीज में सप्लाई करते हैं ड्यूरेबल गुड्स बनाने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर्स में देखा था, वी आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम द नेचर। काउ से हमें मिल्क मिलता है, मतलब वो डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है। आफ्टर दैट वी आर ट्रांसपोर्टिंग द मिल्क इन टू दी फैक्ट्री। उसके बाद हम मिल्क को कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री में। in after transporting the milk in the factory, the workers are making milk के जो इंडस्ट्रीज के जो वर्कर होते हैं, they are making the milk product like पनीर, चीज, बटर, घी। तो ये सब क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स। ओके, आफ्टर दैट वी आर सेलिंग द ड्यूरेबल गुड्स टू दी इन दी मार्केट। ओके, तो जो हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज में वो क्या होता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का एक पार्ट होता है। ओके, The raw material supplied to the industry is often obtained from nature। ओके, जो भी रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री को वो कहाँ से हमें मिलता है, नेचर से मिलता है। और नेचर से मीन्स वो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन का ही पार्ट है, क्योंकि ऑक्यूपेशन विच आर डिपेंडेंट ऑन नेचर इज नोन एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन। दैट्स वाई जो भी हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन से मिलता है वो हम सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज में। Occupation dependent on primary occupation are called secondary occupation। So exact meaning of secondary occupation is occupation dependent on primary occupation। जो occupation primary occupation पे depend करता है that is known as secondary occupation। Tertiary occupation। Now look at picture C, D and F। हमने पिक्चर सी और डी और एफ को देखा है। यू विल सी मिल्क कलेक्शन ऑफ एंड मिल्क सेल ऑफ मिल्क। वहाँ पे क्या हो रहा था, एक जगह पिक्चर सी में मिल्क का कलेक्शन हो रहा था और पिक्चर एफ में मिल्क का क्या हो रहा था, सेल हो रहा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड सेल ऑफ मिल्क प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। ट्रांसपोर्ट भी हो रहा था एक पिक्चर पार्ट में और दूसरे पार्ट में क्या हो रहा था, मिल्क प्रोडक्ट का सेलिंग हो रहा था। ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। Many times this occupation provide complementary services to other two occupation। Such occupations are tertiary occupation। जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के रिलेटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी ऑक्यूपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी ऑक्यूपेशन में रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जाता है तो वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का पार्ट होता है। वहाँ पे क्या मिलता है,
फिनिश प्रोडक्ट बनता है. आफ्टर दैट when we are selling the milk product to the market, in the market, और रॉ मटेरियल को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फैक्ट्री में, these occupations are comes under tertiary occupations. Okay, these occupations are complementary to all other occupations. These occupations are also called service occupation. Tertiary occupation in short we also known as service occupation. This includes transport of goods, loading and unloading of goods and sale of goods. इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का और लोड होता है, अनलोड होता है गुड्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी ऑक्यूपेशन. नंबर 4, क्वार्टिनरी ऑक्यूपेशन. लुक एट पिक्चर ई. पिक्चर ई आप देख सकते हैं. Here you can see a person testing the milk, prepared milk product. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इन पिक्चर ई में, when milk product are finally becoming, milk product are finally completed, प्रोडक्ट जब बन जाते हैं, आफ्टर दैट देर इज अ स्पेशलिस्ट पर्सन हु आर टेस्टिंग द मिल्क प्रोडक्ट. उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि वो कैसा होता है. इज इज गुड टू सेल इन द मार्केट, इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर हेल्थ. उन लोग उसको टेस्ट करते हैं. ओके, दिस पर्सन इज टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ये पर्सन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट है, उन लोग क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं. टू दिस वर्क दिस पर्सन मस्ट हैव सम स्पेशल स्किल. ये वर्क करने के लिए उन लोग के पास स्पेशल स्किल्स होते हैं. दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्विस. ये एक सर्विस का एक पार्ट होता है. बट दिस सर्विस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन. ये कोई ऐसे सर्विस नहीं होती, कोई ऑर्डिनरी सर्विस नहीं होती है. ये इसके लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, इसके लिए हमें एक स्पेशल स्किल चाहिए होते हैं. So therefore we are known as quaternary occupations. Okay, now all these services are directly related to the primary or secondary occupation. For example, those of driver, knife grinder, policeman, the postal service, etc. सब ऑक्यूपेशन से कुछ होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं. बट जो हमें जिस वर्क के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए हमें स्पेशल स्किल चाहिए होते हैं, वो भी एक सर्विस का पार्ट होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी ऑक्यूपेशन. इन टर्शियरी ऑक्यूपेशन में क्या होता था, जैसे लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स होता है. ओके, जैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी ऑक्यूपेशन. बट क्वार्टिनरी ऑक्यूपेशन में उसके लिए स्पेशल स्किल्स होता है, स्पेशल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी ऑक्यूपेशन. बोथ वी कैन से सर्विस ऑक्यूपेशन. And now we will do some revisions. First of all, we have seen the meaning of occupation, human occupation. What do you mean by human occupation? Doing of work, whether it is paid or unpaid. जो भी हम वर्क करते हैं अपने नीड्स के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ऑक्यूपेशन. वेदर हमें उसे कुछ पे मिले या न मिले. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग हाउस वाइफ्स, आपकी मम्मा या फिर कोई भी, वो घर पे कुक करती है, देन शी इज गेटिंग द पेमेंट, शी इज गेटिंग द सैलरी. But when our father is working in the factory, they are getting the salary. Whether he is doing working in the factory or he is doing any service, he is getting the salary. But our mom doesn't get any time salary because she is doing the household work. Nobody will give her salary. Okay, but वो हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए सब काम करती है. That's why this is known as human occupation. After studying the meaning of human occupation, we have seen some examples, some pictures related to the primary occupation, secondary occupation, tertiary occupation and quaternary occupation. Okay, now what is the meaning of primary occupation? Occupation which are directly dependent on nature is known as primary occupation. जो totally depend करता है nature पे, उसको हम क्या बोलते हैं, primary occupation. Secondary occupation, occupation which is directly dependent on primary occupation. जो occupation प्राइमरी ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. ओके, नाउ नंबर 2, tertiary occupation. What do you mean by tertiary? After completing the primary and secondary occupation, in this chapter we have taken the good example of milk product. You see, after getting the milk from the villages, we are transporting the milk to the milk factory. That type of transportation. And next, when from the industry we are transporting the milk product to the retailers. That type of transport, that the time of the transportation is known as that comes under the tertiary occupations. Okay, after that we have seen the quaternary occupation. Quaternary occupation is also in the form of service occupation, but in quaternary occupation we require a special skill, some expert who can text the product. They have having the special skill is known as the quaternary occupation. So in this chapter we have the meaning of human occupation and 4 different types of human occupation. I hope everyone get understood very well. Okay? Thank you everyone.